الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تحزن إن الله معنا صدق الله مولانا العظيم. ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، انسان تو مل جائیں گے، مولا نہ ملے گا. تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا. پروانے کو چراغ بس، بلبل کو پھول بس. پروانے کو چراغ بس، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے خدا کا رسول بس. آج وہ یوم ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. یہ نبی کے کلیمے میں ساتھ، کلیمہ پڑھنے میں ساتھ، کلیمہ بولنے میں ساتھ، کلیمے میں عمل کرنے میں ساتھ، قرآن میں ساتھ، نماز میں ساتھ، روزے میں ساتھ، زکوٰۃ کے فرض میں ساتھ، حج کے فریضے میں ساتھ، ہر عبادت میں نبی کے ساتھ، ہجرت میں ساتھ، اور اس کے بعد جہاں نبی مدفن ہوئے قبر میں ساتھ. تو معلوم یہ ہوتا ہے رسول اور صدیق کو کوئی الگ نہیں کر سکتا، تو رسول کی اولاد اور صدیق کی اولاد کو کوئی الگ نہیں کر سکتا. اسی لیے آج محمد رمیز صدیق کی یہ مجمع کو اس عنوان میں، اس حال میں، یہاں پر ایک ایسا حال پیدا کیا جہاں صدیق آ جائے، جہاں صدیق آ جائے. اور غار میں ہوا کیا؟ غار میں ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نہیں گئے، حضرت صدیق گئے، اور صدیق جا کر بولے غار پاک ہو گیا، غار پاک ہو گیا. ستم آگے اٹھے، یا رسول اللہ اپو نہیں گوانگا، تشریف لے کر آؤ. تو معلوم یہ ہوا اگر تمہارے دلوں میں رسول کو لانا ہے تو صدیق کو لو. تو سمجھ جا کہ تیرے دل میں رسول بھی آ جائیں گے. جب رسول آ جائیں گے تو خدا آ جائے گا. لا تحزن ان اللہ معنا، مت ڈرو اللہ ہمارے ساتھ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ صدیق ہمارے ساتھ. لا تحزن ان اللہ، غم نہ کرو. ہمیں کس بات کا غم ہے؟ نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے. یہ موڑی کیا سمجھتا ہے؟ یہ اپنے دل میں ہنستا ہے. ابھی تو کربلا کا آخری میدان. میں نے ونڈار بیٹھ کے مدرسے کے بچے سے پوچھا کہ یہ نارسی کیا ہے؟ اس نے کہا ایک بیوارسی لایا. نارسی بیوارسی. ہم تو خواجہ کے وارث دار ہیں، ہم کو کوئی ہندوستان سے نکال نہیں سکتا. ہمارے باپ کا پتہ تم پوچھتے ہو، سرٹیفکیٹ، ہم تو صدیق کے غلام ہیں. سجاد نشین نے کہا ہر نبی، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ، اللہ کا گھر بنائے، کعبۃ اللہ بنائے، مکہ معظمہ بنائے، اور وہاں پر ایک رکعت نماز آپ پڑھیں گے تو 1,00,000 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب.
ஒரு ரக்காத் நீங்க தொழுதீங்கன்னா ஒரு லட்சம் रकात तोड़ना नन्हे। लेकिन सिद्दीक़ अकबर ने क्या काम किया? जन्नत, अगर तुम नमाज पढ़ते हो इसलिए नमाज पढ़ते हो, नमाज पढ़ो, एक रकात मक्के में पढ़े तो 1,00,000 का सवाब। लेकिन याद रखो, यहाँ पर जो सिद्दीक़ अकबर ने जो मुकाम को खरीदा है, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था। या रसूल अल्लाह, तुमने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। अब हजरत अबू बकर सिद्दीक उस मुकाम को, रियाजुल जन्ना को खरीद कर रियाजुल जन्ना बना दिया, रियाजुल जन्ना बना दिया। तो मालूम ये हुआ कि नमाज पढ़ते हैं जन्नत के लिए, नमाज पढ़ते हैं जन्नत के लिए। लेकिन जो नबी के सिद्दीक ने जिस मुकाम को खरीद ले, जो रुपया देकर ले उसे जन्नत कहते हैं। तो मालूम यह हुआ कि हमारे दिलों को अबू बकर ने खरीद लिया। तो आए जन्नत तुझ में हूर और कसूर रहते हैं, माना जरूर रहते हैं। आए जन्नत आकर इस दिल का सवार, आ जन्नत कर इस दिल का तवाफ, इस दिल में सिद्दीक रहते। नबी से सिद्दीक, हजरत अबू बकर सिद्दीक की मोहब्बत, कैसी मोहब्बत। आयशा सिद्दीका है, सिद्दीका का लफ्ज आयशा को बताता है, आयशा का लफ्ज सिद्दीका को बताता है। हज़रत आयशा सिद्दीका अबू बकर सिद्दीक की बेटी है कि नहीं? लेकिन जब रसूलुल्लाह में और आयशा में कुछ अनबन हो गए तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक को बुलाया गया, कहा कि यहाँ पर आप सहाबी नहीं, यहाँ पर आप आयशा के बाप हैं, मेरे ससुर हैं, என்னுடைய மாமனாரா இருந்து அக்காக்கு தீர்ப்பு சொல்லு। ஆயிஷா சித்திகா என்ன சொல்றாங்க? யா ரசூலல்லாஹ், முதல்ல நீங்க சொல்லுங்க, நடந்தது என்ன நீங்க சொல்லுங்க। ஹஜரத் அபூபக்கர் சித்திக் அங்கே டென்ஷன் ஆயிட்டாங்க। உலகத்துல டென்ஷனே ஆகாம கோவமே படாத ஒரு ஜாத் இருக்குன்னு அபூபக்கர் சித்திக்குடைய ஜாத்। அதனால தான் அந்த ஜாத்துடைய சிஃபத் எங்க பார்த்தோம், நான் எங்க பார்த்தேன்னா ருமேஷ் மௌலானா சத்திரம் எடுத்துப்பாங்க, வாடகை கொடுத்துட்டு பிரச்சனை பண்ணுவாங்க, இங்கேருந்து அண்டா குண்டாலாம் எடுத்துன்னு போனாலும் கோவமே வராது। காரணம் என்னன்னா அது அபூபக்கர் சித்திக் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவ்வளோ கோவமே வராது சொல்லிட்டு இதெல்லாம் பண்ணாதீங்க। ஆனா கோபம் வந்துச்சுன்னா என்ன நடக்குதுன்னு நான் சொல்லுவேன், அல்லாஹ் நாராज हो जाएगा। हजरत आयशा सिद्दीका சொல்றாங்க, யா ரசூலல்லாஹ் நீங்களே சொல்லுங்கன்னு சொல்லும்போது ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் ஆரம்பிக்கிறாங்க। அப்போ ஆயிஷா சித்திகா, ஆயிஷா நாயகம் என்ன சொல்றாங்க, பொம்பளைங்க உடைய இதே மாதிரி தான்। ஏன்னா இந்த மெஹஃபில் வண்ணாரப்பேட்டில் அந்த ஜஸ்பா, அந்த முஹப்பத், அந்த சவாப், அந்த நூறானியத் இல்லை। நான் நேற்று போயிருந்தேன் அந்த மெஹஃபிலுக்கு, அது இன்னுமா தெரியல, 3 நாளாக நடக்குது ப்ரோக்ராமு। நேற்று நான் போன பிறகு தான் சமாகானியாக நடந்துச்சேங்க। நான் ரொம்ப யோசனை பண்ணேன், நான் வந்த பிறகு ஏன்னா சமாகானி அப்படின்னா காஜாக்கியவனா பெரிய பெரிய முஸ்லீம்லாம் உட்கார்ந்து இருந்தாங்க, அவங்க என்ன பார்க்கறாங்க, நாங்க அவங்கள பார்க்கறேன்। நான் சொல்றேன், ஃபத்வா तुम दो, सवाब हम दे, शरीयत तुम बताओ, तरीक़त हम बताएं, मारिफत ये बताएंगे, हकीकत वो बताएं। और आयशा सिद्दीका कहने लगी, या रसूल आप पहले कहिए। जब हुजूर शुरू किए तो आयशा ने कहा, ठीक ठीक बता। ठीक का माना क्या है? शरीयत सुनना। उन्होंने अबू बकर सिद्दीक है जो एक रपट आयशा को रसीद बता, कौन सही सही बता, कौन शरिया का सुनना, जो अल्लाह को बताता है, जिसे अल्लाह बताता है। मायन
ينطق عن الهوى کہتا ہے وہ سریہ سلما انگے دیتا تیری دی انگل کی یہ تقریر ملٹی تقریر ایک اردو میں بھی ہوگی تامل میں بھی ملا کر ہوگی کیوں اردو کا بھی مجمع ہے تامل کا بھی مجمع ہے یہ صدیق کی محفل ہے سب کو لے کر حضرت ابوبکر صدیق حضرت جو ہوئے ہیں اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا صدیق صاحب نائنہ سنو گے انگے صحابی لے انگے ہوئے معاملہ انگے پنڈت دا انگے سپورٹ سائنو انگے تو یاد چلی گئے یا رسول اللہ صدیق میں اتنا دم نہیں ہے کہ تمہاری گستاخی میں سے سلو گستاخی کیا کہتے ہیں ویڈیو پڑھتے تمہارے ویڈیو پڑھتے لگتے نہ تانگ ماٹے سیدن میں یا رسول اللہ مجھے یہ آج کی گستاخی سہتی نہیں تو اب تم بتاؤ عائشہ کی زبان سے نبی کی گستاخی نہیں سننے والا صدیق کیا امت کی زبان سے سنے گا ایسی محبت کرنے والے ہیں صدیق قربان ہو جاؤ آج کی وہ محفل ہے جس محفل میں میلاد بھی ہے حمد خدا بھی ہے ہر نبی کا ذکر ہے کیوں اس لیے رضی اللہ تعالی عنہ صدیق کا ذکر ہو رہا آج کی محفل ذکر یار غالب اردو ہے ذکر یاد کو کہتے ہیں ذکر کو کرنے میں کیا کہتے ہیں یہ جو ذکر ہو رہا ہے آپ لوگوں کو معلوم نہیں کسی کو سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا ہے یہ ذکر تو آپ کہنا کہ میلاد کا ذکر ہے صدیق کہاں رہتے ہیں جہاں نبی رہتے ہیں کسی نے مجھ سے پوچھا حضرت ابوبکر صدیق کا گنبد کہاں ہے میں مدینے والے کا گنبد عمر کا گنبد کہاں ہے مدینے والے کا گنبد تو دونوں ایک ہی گنبد میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بادشاہ کہ جس کا جواب ہم نہیں دے سکتے ایسی حکومت کرنے والے بادشاہ رسول کی حکومت کا اندازہ لگائیں گے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 وزیر 2 زمین کے وزیر 2 آسمان کے وزیر وزیر کو کیا بولتے ہیں مندری راجہ کے 2 مندری ایک زمین کے 2 آسمان کے 2 آسمان کے مندری کا نام جبرائیل اور میکائیل زمین کے مندریوں کا نام صدیق اور عمر اب ایک مندری کے تعلق سے ایک غلام کے تعلق سے بات کریں گے کہ ان کے علم کے بارے میں کہ وہ علم یہ ہے کہ میکائیل علیہ السلام یہ جو نبی ہے میکائیل یہ حضرت میکائیل علیہ السلام کے علم کا کیا کہنا ان کا علم انہوں نالج آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت میکائیل اگر کھلی بات میں کہے جائے تو یہ نیشنل آفیسر ہے آپ بخاری ہوٹل میں جا کر کیا آرڈر دیں گے یہ میکائیل جانتے ہیں پہلے ہی سے کچن میں رکھتے ہیں آپ پوچھیں گے بخاری کی چکن اور یہ 65 پوچھیں گے تو کہے گا کہ نہیں ہے آپ گئے 2 بجے رات کے تو ملے گا کیا وہ کہے گا کہ بریانی ہی ہے وہ کہے گا کہ آپم ہی ہے تو آپ کہیں گے کیوں چکن نہیں ہے کیوں 65 نہیں ہے جو بخاری ہوٹل والے نے تیار کیا ہے ہر کھانے والا کھا کے دعا دیتا ہے خبر میں یہ ان کو اس کا ثواب پہنچتا ہے اگر تم اس چکن پر فاتحہ دے دے تو درود پڑھ دے تو بسم اللہ بول دیئے تو ثواب ہے اب یہ سپلیر نہیں بولا سپلیر اللہ سن لے میکائیل علیہ السلام اس کی زبان سے بولتے ہیں اب جو سامنے آیا نائٹ 2 மணியா சினிமேட்டி எல்லாரும் பயான் வேற போயிட்டு வந்தோம் அதனால 2 மணிக்கு முடிய நினைச்சிக்காதுங்க 2 மணிக்கு நாங்க வந்து இப்போ வந்து இல்லன்னு சொல்றாங்க என்ன சொல்ற பிரஷர் ஆயிடாது என்னாக்கு இத எடுத்துவாங்க அப்படினு சொன்னா அது எடுத்து வந்து உங்க எதிர்க்க வச்சாவே இந்த இல்ம் மீகாயில் சலாமுக்கு தெரியும்
ایک کا رزق میکائیل علیہ السلام پہنچاتے ہیں، سپلائر کی صورت ہوتی ہے، میکائیل کی ادا ہے، میکائیل علیہ السلام کی دین، یہ نیشنل آفیسر ہے، یہ پہنچاتے ہیں۔ اب ہر ایک کو جانتے ہیں کہ نہیں، ڈیلی بریانی صاحب اشرف جی فیور بندی چنہ صاحب وارا اب یہ صاحب انہوں گنجی تنی ہروٹمائے سڑتنی پچتنی ادھا کڑکنو اپنی کڑکم بودھو میکائیل تیریوں کہ انہوں نے انہا کڑکنو ادھنا رہتا سنی گل گلہ وہاں بریانی کڑتے وہاں بھی گلہ انہوں نے جانتے ہیں کہ سنیوں کو گیارہویں کا کھانا، خواجہ کی چھٹی کا کھانا، مدینہ کا کھانا، اور یہ وہابی جانتے ہیں کہ ان کو کچھ بھی نہیں دے رہا۔ کیوں؟ ان کا پیٹ برابر نہیں، اس کا دماغ برابر نہیں، اس کا دماغ برابر نہیں تو دل برابر۔ ایسا تو نظام اسی سے ہوتا ہے۔ تو سنی کا پیٹ بھی اچھا، دماغ بھی اچھا، دل بھی اچھا۔ اب اس دل میں ابو بکر صدیق آتے ہیں، تو حضرت میکائیل علیہ السلام کے نالج جو علم ہے اس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے، ایک وزیر کا علم کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے، تو آقا کے علم کا اندازہ کیا لگائے؟ اب علم معرفت کی کچھ گچھیاں، اب حضرت ابو بکر صدیق کی مانڈی پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں، سانپ آیا کاٹا، یہ صادق مولا نے بھی کہا، ہمارے رمیز مولا نے بھی کہا، ہر یہاں جانتا ہے کہ یہ سانپ کو انتظاری تھی کہ میرے رسول آئیں گے، میرے نبی آئیں گے، میں ان کا دیدار کروں گا۔ کتنے سال کے پہلے کا سانپ ہے؟ 900 سال کے پہلے کا، ہزاروں سال کے پہلے کا سانپ، معلوم تھا کہ نہیں؟ علم تھا کہ نہیں؟ تو معلوم یہ ہوا جب سانپ کا یہ علم ہے تو صدیق کا کیا علم ہوگا؟ صدیق کا یہ علم ہے تو آقا کا علم کیا ہوگا؟ تو صدیق جانتے ہیں کہ مجھے موت آنے والی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق علم رکھتے ہیں، نانے جن کی حضرت ابو بکر صدیق کے ناندے ہجرت لے صلی اللہ علیہ وسلم کبتنو اندر موت اندروں اندر وزن نہ کمڑیا لے۔ اب وہ جب غار میں رہتے ہیں تو صدیق جانتے ہیں کہ موت آنے والی ہے، پاؤں کو لگا دیا، سانپ ڈھسا، سرکار نے لواب لگایا، زندگی بڑھ گئی۔ تو معلوم یہ ہونا چاہیے حضرت ابو بکر صدیق بھی جانتے ہیں سانپ کاٹے گا، اور یہ جانتے ہیں کہ میری موت آئے گی۔ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں یہ لواب اندے اٹلے تڑونانگلے آدھک پرگی 23 ورشوں صدیق اکبر ابو بکر صدیق والدانگلے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہمارے نبی، تیرے نبی، رب کے نبی، حیات النبی، حیات النبی ہے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس سے معلوم ہوا؟ حضرت ابو بکر صدیق سے۔ یہ صدیق کون ہے؟ ہجرت میں علی کو ساتھ میں نہیں، طاقتور عمر کو ساتھ میں نہیں لیا، عثمان غنی سخاوت پیسہ دے کے معاملہ برابر کر لیا، ساتھ میں نہیں لیا۔ صدیق کو کیوں چنا؟ کہ معلوم یہ ہوتا ہے ذکر یار خار کہ ایسا یار ہے تو اللہ کو بھی جانتا ہے، رسول کو بھی جانتا ہے، جس کا عقیدہ ہے تو خدا نہیں، تو خدا نہیں، بخدا نہیں، تو مگر خدا سے جدا نہیں، تو ہے کیا مگر، تو ہے کیا نہیں، یہ محب حبیب کی بات۔ رسول خدا، خدا بھی نہیں اور جدا بھی نہیں ہے، یہ کون جانتے ہیں؟
حضرت ابو بکر صدیق جاتے ہیں تو حضرت ابو بکر صدیق کا علم وہ علم ہے، لوگ کہتے ہیں نا حضرت ابو بکر صدیق ಉಳಿಯೇ 4 கொண்டாடினாங்க. என்னங்க நீங்க மட்டும் நன்மையை சம்பாரிச்சுக்கிறீங்களே, வந்து உட்காந்தா உங்களுக்கு நன்மை தான். இந்த வாட்டி கூட்டமே வராது, ஏன்னா வண்ணாரப்பேட்டையில தான் எல்லா கூட்டமே இருக்குது, எல்லா முஸ்லிமும் அங்கதான் இருக்கிறாங்க. இல்ல மோமினுங்களா இங்க இருக்கிறாங்க. तो मालूम ये हुआ मुझसे पहले रुमेश अलहाज रुमेश साहब ने कहा நான் வந்து வரதுக்கு முன்னாடி हजरत பேசினாங்க, हाजियार பேசினாரு, उदू पॉइंट पे सही में उदू पॉइंट है. तो अच्छा अच्छी बात को हमें तारीफ करना चाहिए कि नहीं? अब सुनो, एक सहाबी आते हैं रसूल पाक के पास, कहते हैं या रसूल अल्लाह बेहतरीन इस्लाम क्या है? बेहतरीन इस्लाम இஸ்லாம்ல அந்த மாதிரி ஒரு சின்ன விஷயம் காட்டுங்க, நான் அதே கடைபிடிச்சிட்டு போறேன். அந்த மாதிரி பெஹ்தரீன் இஸ்லாம், பெஹ்தரீன் को क्या बोलते हैं? சிறந்த இஸ்லாம் ரெண்டே வார்த்தை, खाओ और खिलाओ. सिर्फ इस्लाम है ना. अब ये हजरत अबू बकर सिद्दीक की जब से जिक्र चली है, कोई पानी पीता है, कोई चाय पीता है, कोई सुंदर खा रहा है, कोई समोसे खा रहा है, सब के खा रहे हैं. अब जाने वाला खाली हाथ नहीं जाएगा, एक तो रूहानी ग़िज़ा भी लेके जाएगा और जिस्मानी ग़िज़ा भी लेके जाएगा. तो मालूम ये हुआ बेहतरीन इस्लाम कहाँ है? अबू बकर सिद्दीक के घराने में, अहले बैत के घराने में, गुलामान मोहम्मद के घराने में बेहतरीन इस्लाम. खाओ और खिलाओ. सुन्नी देखा बेहतरीन इस्लाम, नमाज नहीं बोली, रोजा नहीं बोली, अगर बोलते तो नाटक था. नमाज नहीं, रोजा नहीं, ज़कात नहीं, हज नहीं, सब इबादत है. बेहतरीन इस्लाम नहीं, इस्लाम अलग, इबादत अलग. पहले इस्लाम को समझ, बाद इबादत कर. तो बेहतरीन इस्लाम क्या है? खाओ और दूसरों को खिलाओ. सुन्नी देख कर पकड़ के बोले बेहतरीन इस्लाम हमारे पास है, 11वीं हमारे पास, ख्वाजा की छठी हमारे पास, शाबान की फातिया हमारे पास है, रमजान के हर ताखरात हमारे पास है. उसके बाद रजब आने से पहले हमारे पास क्या है? हजरत अबू बकर सिद्दीक की फातिया है, बेहतरीन खाओ और खिलाओ. ये जितने भी आए हैं ये पूरे पोस्टर देखकर नहीं, क्योंकि हमने इस साल में पोस्टर नहीं लगाया. कहा आए अबू बकर सिद्दीक, आप जिसे चाहेंगे वो आएगा. तो पोस्टर नहीं, बैनर नहीं. क्यों? इसलिए कि सिद्दीक जिसके दिल में आते हैं वही आएगा. अब इत्मीनान हो गया ना? पलट के देख, जहां तक शादी खाने की दीवार है वहां तक मजमा है. तो मालूम ये हुआ तुम आए नहीं, हजरत अबू बकर सिद्दीक लाए. हजरत अबू बकर सिद्दीक का वो मुकाम, जब हिजरत की रात सरकार को साथ में लेकर गए, हयात भी मिल गई और क्या मिल गया? ला तहज़न इन्नल्लाह माना, बेशक डरो मत, अल्लाह तुम्हारे साथ है. तो अल्लाह तुम्हारे साथ नबी कह दिए तो क्या वो शाम से डरेंगे? क्या वो मौत से डरेंगे? मौत मखलूक है, अल्लाह खालिक है. खालिक बड़ा की मौत बढ़ेगी, अल्लाह बड़ा की मौत बढ़ेगी. बात तो ये राज सिद्दीक अकबर जानते थे मुझे मौत में ही आएगी. क्यों? मैं हयातुन नबी के साथ. हजरत अबू बकर सिद्दीक वो इल्म मारिफत रखने वाले, हजरत अबू बकर सिद्दीक हुजूर पर फिदा होने वाले,
ایسی سچائی کہ وہ سچائی کس کے پاس بولیں گے تو مارک لگے گا، ریمارک لگے گا۔ ابو جہل جانتا تھا معراج سے نبی آتے ہی ابو جہل کے پاس سنا، کسی صحابی سے نہیں۔ حضرت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آ کر ابو جہل سامنے ملا، اللہ نے ایسے نظام کو بنایا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے تعلق سے سناتے ہیں، ابو جہل سنا اور سیدھے صدیق حضرت ابو بکر صدیق کے پاس آیا۔ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس آ کر بولا، جس کا کلمہ پڑھتے ہو، جسے سردار مانتے ہو، جسے سرکار مانتے ہو، جسے دو جہان کا بادشاہ مانتے ہو، اس نے کیا کہا؟ یہی کہا کہ معراج کا واقعہ۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا، کس سے سن کر آیا ابو جہل؟ یہ جو میری آواز بیٹھ گئی ہے یہ میرا قصور نہیں ہے، میں کا قصور ہے۔ میں کئی تقریریں کرتا ہوں، مجھے معلوم ہو جاتا ہے کہ میں کے دل میں کیا ہے اور تمہارے دل میں کیا ہے، میرے دل میں کیا ہے۔ ابھی تینوں کے جھگڑے میں کون جیتے گا، کسے ابو بکر صدیق جتائیں گے، یہ اللہ جانتا ہے۔ تو آپ ایسے ہی سنتے رہو، میں علم معرفت کے گچھی کھولوں کہ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس ابو جہل جا کر بولا، تمہارے وشن تریما نم سلسلہ رور وشن تریما مولا ارکرا وشن تریما என்ன விஷயம்? ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் மேராஜுக்கு போயிட்டு வந்தாங்களா, மஸ்ஜித் அக்ஸாக்கு போயிட்டு வந்தாங்க। இங்கே இருக்குது மஸ்ஜித் அக்ஸா। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे सुनाए, अबू जहल जो सुनाया, இது தமிழ்ல அப்பப்ப நான் ஏன் தெரியுமா சொல்றேன், சில பேருக்கு புரியாம தூங்கிட்டு கூடாது। अबू बकर सिद्दीक ने सुनकर कहा, கேட்ட உடனே சொன்னாங்க அபூ ஜஹல், யார் இது உங்ககிட்ட சொன்னாங்க? உங்க ரசூலுல்லாஹ் தாங்க। சத்தக்தா யா ரசூலுல்லாஹ், सद्दक़ता, आपने जो कहा सच कहा। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक सीधे हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाते हैं और जाकर ये कहते हैं, या रसूल अल्लाह, जो मैंने अबू जहल से सुना, अबू जहल सुनने वाला ना कहते ने, सब क्या ठीक है, सही है? तो हुजूर मुस्कुराकर बोले, तुम सच कहते हो और फिर मोहर लगाना चाहते हो, सर्टिफिकेट मांगना चाहते हो। सद्दक़ता, सिद्दीक का लक़ब तभी मिला। तब से इससे पहले अबू बकर थे, अब सिद्दीक हो गए। अब हुआ क्या? इससे एक राज दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाह இல்லை, இன்னொரு விஷயம் என்ன தெரியுமா? இவங்க வந்து அப்படியே கும்பலை பார்த்து யா நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொல்றாங்க, ரசூலுல்லாஹ்வுடைய பேர் வந்தோட ஏஞ்சி நிற்கிறாங்க। நீ ரசூலுல்லாஹ்வுடைய பேர்ல ஏஞ்சி நின்னாதான் அத்தஹியாத்துல உட்கார முடியும்। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी बैठकर पढ़ता, घर को पढ़ता। अब बहुत खुश हो, ஆமாங்க ரசூலுல்லாஹ்வுடைய பேர் உட்கார்ந்துட்டாங்க நமாஸ்ல। ஏங்க இங்க நிற்கிறாங்க? ஜனாதா நமாஸ்ல, मिंबर में, खुतबे में, तो रसूल का नाम खड़ कर बोला तो अच्छा है, नहीं बोला तो बेबासी। अब ये जो मेराज का वाक़या है, बोलते नांगो இப்போ வந்து அங்கே மதீனால ஒருத்தர் இருக்கிறார், எங்க அபூபக்கர் சித்திக் ரலியல்லாஹு தஆலா அவருடைய அங்கே மஸாரான்னு யாராவது ஃபாத்திஹா பண்றாங்களா? कोई फातिहा दिलाता है मस्जिद नबवी में, अबू बकर सिद्दीक की मज़ार के पास, उनके खबर अनवर के पास? இல்லைங்க, அதெல்லாம் கிடையாது, இங்கே தாங்க இந்த ஃபைஸ் மஹல்ல அந்த ருமேஸ் மௌலாவோ, அந்த சாதிக் மௌலா, அந்த முஃபக்கிர் இஸ்லாம் இவங்கெல்லாம் சேர்ந்துட்டு ஒரு ப்ரோக்ராம் பண்றாங்க, அங்கெல்லாம் அப்படி கிடையாதுங்க। ஏன்னா அவங்க உண்மையாளங்க, हमें सच, हमें हक पर है। நாங்க உண்மையா இருக்கிறதுனால தான் காபா
ہمیں سچ میں رہنے سے کہتے ہیں، یہ وہابیہ بولتے ہیں کعبہ ہمارے ہاتھ میں ہے، مدینہ ہمارے ہاتھ میں ہے، سچ میں رہنے کی وجہ سے۔ کون بولتے سو؟ سعودی کے پورے دیوانے، پورے شیخ ہمیں سچ پر ہیں، حق پر ہیں، ہندوستان والا نہیں، ہمیں دیوانے۔ میں بولا مسجد اقصی کس کے ہاتھ میں ہے؟ مسجد اقصی یہودی کے ہاتھ میں، سچ پر کیا حق پر ہے کیا؟ یا سچ بھی حق نہیں ہے، محبت کی بنیاد عشق کس سے ہے، محبت کس سے ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق کو ان کی مزار کو چھوڑ کر اس حال میں، فیض حال میں آنا پڑے گا، اس لیے کہ عاشقوں کی محنت ہے۔ یہاں پر میجارٹی نہیں دیکھی جائے گی، یہاں پر عشق محبت دیکھا جائے گا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق سے جا کر ابو جہل نے کہا بشین تیرے معامل کے رسول اللہ انبل وقت بھی نماز آنجی وقت آکی میرے واقعی ڈوندر گرا گئے تحفہ لے اللہ گفٹ نماز پڑھتر گرا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا ابو جہل کھڑ باہر، میں فوراً ظہر کے پاس پڑھ کھاتا ہوں۔ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء یہ کون وقت دکھائے؟ حضور نے دکھائے۔ کس کو دکھائے؟ کس کو؟ ابو جہل کو۔ اب حضرت ابوبکر صدیق کس سے پوچھتے ہیں؟ ابو جہل سے۔ بولنے کا وقت کیا تھا؟ معراج کب ختم ہوئی؟ فجر میں۔ تو وقت فجر میں ابو جہل نہیں ملا، ظہر کے وقت میں ملا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق ظہر پڑھ رہے ہیں، تو پہلے نماز پڑھنے والے کون؟ کس کی بات پر؟ کس کی گواہی پر؟ ابو جہل کی گواہی۔ ابوبکر مان رہے ہیں تو امام ابو حنیفہ کی گواہی نہیں مانتا، امام شافعی کی گواہی نہیں مانتا، غوث اعظم کی گواہی نہیں مانتا، غریب النواز کی گواہی نہیں مانتا، ابوبکر صدیق کی بات نہیں مانتا، وہ تو ابو جہل کی بات۔ کیا راز تھا؟ راز یہی تھا کہ نماز نبی کی شان، معراج میں نبی جا کر آئے، ابو جہل کہا مذاق سے بھی، تو ابوبکر صدیق مان لیے، اس کو ابوبکر صدیق کہتے ہیں۔ انکار نہیں کیا، کافر کہا، ابو جہل کافر، لیکن نماز کی بات، معراج کی بات، نبی کی بات تو ابوبکر صدیق مان لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کی بات کافر بھی بولے، کافر سنالیت کو مان لے۔ کس نے بتایا؟ ان کے دادا نے بتایا، ابوبکر صدیق نے بتایا۔ اس کے رگوں میں خون دوڑ رہا ہے، وہ ابوبکر صدیق کا خون ہے۔ یہ یوم میں پل ورشم نڑتروں، کالنڈر پرنٹ پڑھیٹے رکھلو، نمو خان خالے نڑتیٹے رکھلو، فی سبیل اللہ ٹرسٹ نڑتیٹے رکھلو، نمو پیر بھائی میں گلہ کرتے رہی ہو، اور آثار یہ مجلس لے، نمو صادق مولا کو رومیز مولا بندہ کالنڈر پاتے اندے پوائنٹ لے پوائنٹ وچا اپا ہوں میں دیں جینٹ، وہ پوائنٹ رکھ کر بولے کہ یہ کیا ہے؟ صدیق حضرت ابوبکر صدیق کا دروازہ ہے، گنبد نبی کا ہے، یہ کیا نئی بات ہے؟ تو کہا میں نے یہ ابوبکر صدیق کا عرس ہے۔ تو ان کو یہ بات دل میں آئی، میں اولاد ابوبکر ہوں اور میں نہیں مناتا۔ کہا آپ مفکر اسلام ہیں، میں خدمت اسلام ہوں، مجھے یہ میرے گھر میں میری جگہ میں ان کا یوم منانا چاہیے۔ تو میں نے صدقتا کہا، میں نے مانا۔ گزشتہ سال ہم نے یہاں پر محفل چلائی، یہ مجلس سجائی، ابوبکر صدیق آئے، دعا دیے، بعد میں سننے میں آیا
رمیز مولا بیمار ہے. میں نے کہا ابو بکر صدیق آپ کی اولاد کیسے بیمار ہو سکتی ہے؟ عرس منانے کے لیے آپ حیات دے دیجئے، صحت دے دیجئے، تندرستی دے دیجئے. تو آج وہ صحت نظر آتی ہے. آج ابو بکر صدیق کی اولاد ہم دیکھ کر ابو بکر کو یاد کر رہے ہیں. تو یہ صدقہ کس کا ہے؟ حضور کا صدقہ. یاد رکھو ہمارا ایک پکارنا بیکار نہیں ہوتا. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہ یہ انسان شیطان بلا کر دے منہ نالا توڑو مڑیل ہے. فجر کی نماز میں بھی انخلاف. وہ کیا خلاف ہونے والا مجھے تو معلوم. ظہر ٹائم لے عصر ٹائم لے கொஞ்சம் கூட்ட இருக்கிற வரைக்கும் தொழுதாங்க. ஒரு வக்து 2 வக்து. இப்போ 3 நாளா பார்த்தா நான் நினைக்கிறேன் தொழுவோம் உங்களுக்கு மாஃப் தான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா இவங்கதான் ஜெயிச்சு கொடுக்க போறாங்க. இப்போ அது கூட்டம் வந்தாவே எல்லாமே வருவாங்க. ஒரு நாள் பார்ப்பாங்க. 2வது கூட்டம் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா ज़्यादा महफिल ज़्यादा मजलिस जमते रही तो उसमें एक्टर भी आता, उन्हें भी आता, सियासतदान आता, सब आता. आज मंसूर अली खान आया करते, उसके बाद खान अब्दुल गफ्फार खान आया करते, उसके बाद सीमान आया करते, उन्हें इन வீட்டு பக்கத்துல ஜன்னல்ல இருந்து பார்த்தா மொட்டை மாடியில இருந்து பார்த்தா எல்லாமே ஸ்டேஜே தெரியும். அங்க இருக்கிறோம் பார்த்துக்கிட்டே அவன் வரா இவன் வரா பாடுறாங்க. என்னென்னமோ நடக்குது. நான் யோசனை பண்ணேன் இன்னைக்கு किसे की बुलाए तो उन्हें आता है. हमें हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को बुला कर देखेंगे, वो आ जाएंगे, हमारा मसला हल हो जाएगा. देखो ये खड़ने में 3 किस्म बताता हूँ. वर्कर निन्ना चुपके ऐसा सीधा. मैं कहूँगा कि वो खड़ना सवाब है. खड़ना सवाब, खड़ना गुनाह पावम. और खड़ना ना सवाब है ना गुनाह. ஒருத்தர் மூணு ஆள் ஒருவர் நியத்தா நிற்கிறார். இப்ப நியத்தா பார்க்கணும். ஒருத்தர் தூக்கமே வரல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படி கை இப்படி தூக்கி இப்படி மில்லி அப்படியே இப்படி பண்றாருன்னா ரிலாக்ஸேஷனு அவருக்கு சவாபம் இல்லை குணாவும் இல்லை. ஒருத்தர் தூக்கமே வரலையே ஒரு பெக் அடிக்கலாம் அப்படின்னு நின்னாரு மேல இருந்து பார்த்தாருன்னா ஃப்ரிட்ஜை திறந்தாருன்னா அந்த நிக்கிறதே ஹராம். அப்ப முதல்ல நின்னது சவாபம் இல்லை குணாவும் இல்லை. 2வது ஒருத்தர் நின்னாரு அவரு ஒன்லி குணா நின்ன நோக்கமே குணாதான். படுத்து நின்றார் தூக்கம் வரல. அங்கிருந்து அவர் இராதா பண்ணார் பாருங்க, நியத் பண்ணார் பாருங்க, அங்கிருந்து ஆரம்பமாச்சு. ஒருத்தர் தூக்கம் வரல வசூ பண்ணலாம் குரான் எடுக்கலான்னு நின்னாரு. நிக்கிறதுலாம் சவாப் தான். அப்போ எல்லா இடத்துல உட்கார்றது சவாப் ஆகாது. இங்க உட்கார்றது சவாப். कोई एक जना रात में उठा, शैतान की जिक्र शुरू किया. प्रैक्टिस मेक परफेक्ट है ना. प्रैक्टिस के ऊपर ये जो है परफेक्ट था. निर्मला स्टोरी मदरसा में लुंगिया फाड़ने वाला था. लुंगिया फाड़ते घर घर लुंगिया फाड़ते. अब रात में जाकर सोया लुंगी फाड़ा. हुआ नहीं क्या? प्रैक्टिस मेक परफेक्ट बोला कि नहीं? जिसे जो आदत हो जाती पढ़ के उनमें पढ़ना नहीं आ रही. तो याद रख सिद्दीक बुला के आदत कर ले, तेरे क़ल्ब में सिद्दीक आ जाएंगे. तो शैतान बुलाया तो शैतान अगला खड़ा है. बोल बा बिलाल तो ये क्या होगा? बिलाल को बहुत ताज्जुब हुआ. सरकार इतना நடந்துச்சு. वेरो शैतान बुलाया, मैं आपको खड़ा सामने. कैसा रे था उन्हें वास्तविक मालूम है तुम ना. आज हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की महफिल है, मजलिस है. आज एक नई चीज जानकर इस महफिल में जाएंगे. नोट करके रख लो कि आले रसूल आया, एक ऐसी महफिल सजाया, हजरत अबू बकर सिद्दीक की सच्चाई बताया.
तुम्हें आज तक तुम्हारी रूह को देखे हैं क्या? உங்களுடைய ரூஹ் நீங்க பார்த்திருக்கீங்களா? பார்க்கணும்னு யார ஆசைப்படுறீங்க கேளுங்க. அப்ப நீங்க பார்க்க விரும்பல. இவங்கெல்லாம் இல்ல சில பேர் ரூஹா ஹஜ்ரத் வாண்டா ஹஜ்ரத் அத மட்டும் அவன் மரணைக்கு பார்த்தா சொல்லு சாவுற பேச்செல்லாம் பேசுறாங்க. அத நம்ம நல்லா இருக்கலாம் வாழலாம் சொல்லிட்டா இந்த மேற்கிலுக்கு வந்திருக்கிறோம். याद है तो अब जब बिलाल बुलाया शैतान की जो जिक्र किया शैतान खड़ा सामने कैसा था उन्हें मेरे सर का ताज अलग नहीं कह रहे नहीं वैसा रूह कैसी रहेंगी मालूम क्या आईने में खड़ी शीशे के सामने खड़ी आईने में क्या बोलते कन्नाडी ले इधर பார்த்தாவே இப்போதான் மௌலாக்கெல்லாம் வந்து நம்ம ரூ எங்கே இருக்கு நமக்குள்ளே இருக்குது எப்படி பார்க்கறது கண்ணாடி நெல்லிக்கோ அதுல வர்றது பாத்தீங்களா அதுதான் ரூ வெளியில இருக்கிறது ஜிசமே கண்ணாடியில தெரியுது ரூ ஆத்மா நம்மளுடைய ஆத்மா நம்ம பார்க்கலாம் யார் சொல்லி கொடுத்தாங்க அபூபக்கர் சித்திக் ரலியல்லாஹு அவங்களுடைய ஆத்மா அவங்க பார்த்தாங்க நான் ரசூலுல்லாஹ்க்கு ஜிஸ்ம் கொடுத்து ரசூலுல்லாஹ் படுத்திருக்கிறார் ஆத்மா கா है रसूल देख रहे हैं अब आत्मा को सांप में ही धसा पांबु बंद आत्मा के कड़किल जिस्म को काटा हमको तुमको रूह को काटा मर जाते हज़रत अबू बकर सिद्दीक के जिस्म को काटा हयातुन नबी ने क्या किया जिस्म को सीधा कर दिया रूह तो अबू बकर सिद्दीक की मोहम्मद रसूलुल्लाह की रूह को देख रही है मोहम्मद रसूलुल्लाह की रूह वला सौफ युती का रब का पता लगा और सहाबी की तरह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करेंगे हजरत जाबिर की जैसे हजरत जाबिर की क्या करेंगे जाबिर சாப்பிடுறதுக்கு இருக்கா ரொம்ப பசிக்குது அப்படின்னு கேட்கும்போது ஹஜரத் ஜாபிர் அவங்களுடைய கையில காபத்தை தெளிக்கும் அவங்கள பையில அவங்கள பாக்கெட்ல கைய போட்டு 7 பேச்சப்பழத்தை எடுத்தாங்க எடுத்து ரசூலுல்லாஹ் கையில கொடுத்தாங்க ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அதை வாங்கிட்டு அவங்களுடைய ரைட் சைடு है ना அதுக்கு மேல லெஃப்ட் கை வச்சுட்டு சஹாபாக்கு கூப்பிட்டாங்க யார் யாருக்கு பசிக்குது எல்லாமே வாங்க எல்லாமே வரும்போது அதுல இருந்து எடுத்து சாப்பிடுறாங்க அபூ ஹுரைரா ரிவாயத் பண்றாங்க நானே 170 खजूर சாப்பிட்டேன் அப்ப மத்த சஹாபா எத்தனை பேர் இருந்தாங்க அவங்க 200 பேர் இருந்தாங்க எல்லாமே சாப்பிட்டாங்க அப்புறமா ரசூலுல்லாஹ் என்ன பண்ணாங்க அந்த பேச்சப்பழம் 7 இருந்துச்சு மறுபடியும் ஹஜ்ரத் ஜாபிர் கிட்ட கொடுத்துட்டாங்க இந்த வாக்கியானால என்ன தெரியுது ये वाकई से आपको क्या मालूम होता है என்னங்க இதுல ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் கை ஆச்சேங்க இதுல போய் என்னங்க சொல்லணும் நாங்க ஆஷிக் ரசூல் ஆச்சேங்க நாங்க எங்க பயப்படணும் என்ஆர்சிகள்லாம் பேவார்சிகள்லாம் எங்க கிட்ட எங்களுடைய அப்பா அட்ரஸ் கேட்டா உங்க அப்பா அட்ரஸ் என்ன எங்களுடைய அப்பா ஆதம் அலைஹிஸ்ஸலாம் உங்க அப்பா அட்ரஸ் என்ன मेरे बाप का नाम आदम तेरे बाप का नाम क्या बता याद रख वो हराम की औलाद है बाप का नाम नहीं बता सकता इसीलिए सबके बाप का नाम पूछता है இது வந்தவுடன் நான் படிச்சேன் எனக்கு புரியல இது என்ஆர்சி என்ன சிஏஏ என்ன அப்படின்னு கேட்டேன் என் மகன் புரிய வச்சாரு நான் ஒரே ஒரு வாட்டி புரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஒரே வார்த்தை புரிஞ்சுக்கிட்டது என்ன தெரியுமா இவன் அப்பா அட்ரஸ் தேடுறான் நம்ம கிட்ட அதுக்கப்புறமா கேட்டேன் एनआरसी என்ன அப்படின்னா कैबिने बाग नहीं रहेगा चाहे वाला एन से नहीं आर से रहेगा सी से चाहे वाला नहीं रहेगा चाहे वाला இப்போ இந்த வாக்கியால இருந்து உங்களுக்கு என்ன தெரிஞ்சு ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் கேட்டாங்க ஹஜ்ரத் யார் கொடுத்தாங்க ஹஜ்ரத் ஜாபிர் கொடுத்தாங்க மோஜிதாங்க இது ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் மோஜிதா ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் மோஜிதா என்ன கையில बरकत இருக்கு ये शर आपको मालूम ये शरीयत है ये हदीस है लेकिन ऐसे ही पीर और मुर्शिद आकर ये बता कर नहीं जाने वाला आम आदमी आम मौलवी
عالم مفتی شریعت بتائے گا، تصوف جاننے والا طریقت بتاتا ہے۔ تصوف کیا ہے معلوم؟ رسول اللہ پوچھے نا، کس سے پوچھے؟ صحابی سے کیا پوچھے؟ حضرت جابر کی تینا کہتا گیا اسی کت سابت کے داؤدی انکا کہتا کر لیا اب رسول اللہ اور صحابی کی تے کیک رمبو دے کیک کلام دینا اب نی غلام رسول اللہ کی تے کیک நம்ம வந்து ருமேஷ் மௌலா ஹஜ்ரத் அபூபக்கர் சித்திக் உடைய அவுலாது தெரியாது, உங்களுக்கு மட்டும் எப்படி தெரியும்? நீங்க எப்படிங்க? பல சில்சிலாலாம் வந்து போறாங்க, ஹாஜா கி சட்னி நடிக்கிறது நான் பார்த்தேன் ஒரு போஸ்டர்ல, அது இங்க அட்ரஸ் போட்டு இருந்துச்சு, என்ன சென்னையில ஒரு சட்டி உருது லஃப்ஸு, சட்டி தமிழ் லஃப்ஸு. அப்ப நான் சொன்னேன் அங்கே பிரியாணி ஆக்குறாங்க, இல்ல அது இல்ல, அப்ப எதுக்கு சட்டி போட்டாங்க? तो याद रखो कई सिलसिले आए, कई पीरों मुर्शिद आए, लेकिन औलाद अबू बकर सिद्दीक को देख नहीं पाए, समझ में नहीं आई बात, राज नहीं मालूम हुआ। मैं पूछा इस साल जब उम्रा को जाके आया इसी महीने में, तो मैं अबू बकर सिद्दीक से पूछा आपकी औलाद है, हमें कैसे मालूम किया? तो हजरत अबू बकर सिद्दीक जब रियाजुल जन्ना में मैं बैठा, जब मालूम हुआ रियाजुल जन्ना, तो आप समझेंगे कि रियाजुल जन्ना ले போய் என்ன தெரியும் பண்ணுவாங்க, ढकलम ढकी नीतल नातल दो रकात नमाज पढ़ लेते हैं, सबको मालूम ना? रियाजुल जन्ना में ऐसा बैठते फजर से असर तक उनका वजूद जाता है, और मकरू वक्त पर मकरू टाइम ले तो भी डर गया ना सुनने और पाकिस्तान के कुंजो तल्ले के जरा हटो इसने देख कर बोला यहां नमाज पढ़ोगे क्या इतनी जगह में? अभी ये கூட 10 பேர் வேற இருக்காங்க, ரியாதுல் ஜன்னா का தனியா போலாமா? और अहल बैत को तनिया बोला इनके भी तोड़ो முடியாது दिनार और उर्दू सुना यहां कैसे नमाज पढ़ेंगे? मैं बोला जन्नत को नमाज पढ़ने नहीं आती, जगह नहीं है जन्नत, जब जन्नत मिल जाती है वो नमाज से मिलती है। रियाजुल जन्ना मिल गया, अबू बकर मिल गए, जन्नत मिल गई। मैं जाकर खड़ा, अब वो देखा ऐसा टांग उठाकर आप खड़ो गए, खड़कर बोला ऐ परवरदिगार तूने तेरे हबीब के सदक़े से रियाजुल जन्ना में लाया मौला, मुझे जिंदगी भर जहन्नमी ना बनाया। बोलकर बोले अबू बकर सिद्दीक उमर फारूक के वसीले से मेरी दुआ को कबूल कर गुजरा गया, मेरे पीछे भाग कर आकर बोला क्या दुआ किया मौलाना आपने? बोला जो दुआ जन्नत में मांगना थी वो किया। बोला कि आपकी अजीब दुआ है, मैंने कहा ये मेरे पीर का सदका है। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक की औलाद हमें कैसे मालूम? அவருடைய குடும்பத்தார் எங்களுக்கு எப்படி தெரியும்? ஒரு மஜ்லிஸ்ல सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान कर रहे हैं मस्जिद नबवी में, हजरत अली करमल्लाहु वजहू आखिर में गए तो हुजूर देखकर तकरीर करते करते हजरत अली को देख रहे हैं, अबू बकर सिद्दीक फौरन वहां से उठ गए, अंगिंद एक चीज हजरत अबू बकर सिद्दीक சொன்னாங்க अली இங்க வாங்க, இங்க வந்து உட்காருங்க அப்படின்னா सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीर को रुका कर बोले इज्जत वाला ही इज्जत वाले अब मालूम ये हुआ कि अल्लाह ने हमें इज्जत दी, हजरत इमाम हुसैन की औलाद बनाया, ये अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह तबारक तआला का शुक्र अदा करते हैं, उसका फजल है, उसका करम है। मैं गुनाहगार खताकार बदकार को आले रसूल बनाया, औलाद गरीब नवाज बनाया, तो मालूम ये हुआ मुझे बुलाकर क्यों यहाँ बिठाए रुमेश साहब, इज्जत वाला ही इज्जत वाला। अबू बकर सिद्दीक कहीं नहीं छुपे आशिकों के दिल में,
ان کی آل میں قیامت تک کے لیے. اب بولتے سے کیا معلوم اور எப்படிங்க ஒரு அவ்வளவு சில பேர் சொல்லுவாங்க அபூபக்கர் இது நாங்க புதுசு என்ன பண்றாங்க புதுசா பண்றாங்களே இது எப்படிங்க அப்படினாலே தெரிஞ்சுக்கங்க நீங்க ஹசத் பண்றாங்களா அப்படின்னா ஒரு ரிஷாக்காரர் இருக்கிறான் ஒரு குடிக்காரர் இருக்கிறான் ஒரு பத்காரர் இருக்கிறான் ஒரு குனாகாரர் இருக்கிறான் உங்களுடைய பையன் ரிசப்ஷன் கூப்பிடுவீங்களா உங்க பர்த்டே வீட்டில் பர்த்டே இருக்கு உங்களுடைய பேரனார் பர்த்டே இருக்கு அது கூப்பிடுவீங்களா ஆனா அவன் வீட்டு வாசல்ல தான் இருக்கிறான் கீழே இருக்கிறான் கூப்பிட்டீங்களா இல்ல வர்றவங்க போறவங்களாம் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறான் மாதிரி பண்ற இருக்கிறாரு அதெல்லாம் சரியில்லைங்க ஏன்னா இவனை கூப்பிடல வீட்டு கீழே இருக்கிறான் नमाज पढ़ता रोजा रखता कलीमा पढ़ता ज़कात देता सब करता नांगला ये पढ़ लिए ये करने का काम हमारा नहीं है नांगा पढ़ रहे हैं अबू बकर सिद्दीक ये जो मंजर देख रहा है जो मजलिस देख रहा है मदीने वाले की मजलिस है ये इलेक्शन का कूटम नहीं है अबू बकर सिद्दीक के सिलेक्शन का कूटम तो मालूम ये कर लो कि हजरत अबू बकर सिद्दीक तुम्हारे दिल में आ जाएंगे तो याद रख नमाज पढ़ने की तबलीग करने की जरूरत नहीं ऐसे महफिलें सजा तुमको मालूम है अबू बकर सिद्दीक की करामत क्या है मालूम है मैं महसूस कर रहा हूं अबू बकर सिद्दीक की करामत क्या है मेरी आवाज बिगड़ी हुई थी वो बना दिए क्या करामत वो बातें मैं नहीं कर सकता अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि 4 घंटे बोल सकता है तो मालूम ये हुआ हमारे पास कुछ भी नहीं है ये सिद्दीक का सदका है फारूक का सदका है उस्मान की देव है अली की औलाद है अबू बकर सिद्दीक अगर तुम्हारे दिल में आ जाएंगे तो याद रख लो तुम नमाजी हो जाओ तुम सच्चे हो जाओगे तो अल्लाह तबारक व तआला कुरान में फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह ऐ ईमान वालो नमाजी रोजे ज़कात हज इरयचम रखने वाले कूनू मअस सादिकीन अबू बकर सिद्दीक के साथ हो जाओ अबू बकर सिद्दीक के साथ हो गए तो गौसे आजम उनके साथ हो गए ख्वाजा आजम उनके साथ हो गए अबू हनीफा उनके साथ हो गए इमाम शाफी उनके साथ हो गए इमाम अहमद बिन हंबल उनके साथ हो गए इमाम मालिकी उनके साथ हो गए तमाम औलिया अल्लाह यहाँ तक के हमारे बंदा नवाज हर पीर और मुर्शिद उनके साथ हो गया तो याद रख लो अल्लाह किसको कहता है सच्चों के साथ हो जाओ कूनू मअस सादिकीन ला तहज़न इन्नल्लाह मअना मत डरो अल्लाह हमारे साथ है किसने कहा रसूलुल्लाह ने कहा कैसे इसलिए कि सिद्दीक अकबर उनकी रूह को जानते हैं और रूह कायनात साथ में है तो डरने की क्या बात है वो डरे नहीं रसूल ने कहा नहीं ला तहज़न न रसूल ने कहा न अबू बकर सिद्दीक ने डरे अल्लाह खुशखबरी सुनाता है ला तहज़न मैं तुम्हारे दोनों के साथ आप सुनेंगे तो मालूम ये हुआ ला तहज़न इन्नल्लाह मअना अरे खौफ न करो गम न करो किस बात का गम है तुम्हें ऐ सिद्दीक के गुलाम गम न करो ये नासी बेवासी कुछ नहीं है अल्लाह तुम्हारे साथ है व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम